Good morning, all of you. Switch on your video. See, today we are going to learn a very difficult topic, right? That's the replication of DNA. I will try my best to explain you in a simplest way, right? You have to cooperate with me. As and when I ask the questions, please give me a quick reply so we can complete this topic in a proper way, right? Now, first of all, what is DNA replication? Right? Replication meaning what? To form a exact copy, right? Mirror image. We can say that the mirror image. आप mirror के सामने खड़े रहते हैं, right? So exactly same image is image you can observe in a mirror. So same thing over here that whenever during the cell cycle, right? During the cell cycle, one of the phase is there, that's the interphase. In okay, cell cycle has these two phases, interphase and cell division. Now, interphase, remember in that G1 as G2 phases are there. Can you tell me out of these three phases, in which one quickly the DNA replication occur? DNA replication, DNA duplication, you have learned in the 11th standard, cell cycle and cell division chapter. बोलिए, in which one that yes, during the S phase, correct. During the S phase, this DNA duplication process occur, right? And after that means one of the parental DNA is there over here. This parental DNA first form, it dissociate and form a two copies of DNA. You know mitotic cell division. One parental cell that divides into two daughter cells. Now in both the daughter cell, that the same type, same number of nitrogen bases containing DNA molecule present. So exactly like a parent, suppose this is a parent DNA, right? This parent DNA first undergo that interface G1 as G2. S में क्या हो जाएंगे? इसके दो copies form हो जाएंगे. And after that it undergoes cell division, so it can give one copy of DNA to each daughter cell. Right? Now, how it can be formed this two copies of DNA which are exactly similar to the parental DNA, right? They are exactly identical copies. This DNA are the identical copies. Now, so for that we are going to learn this process, DNA replication. So DNA replication, DNA helix synthesizing its identical copy having same number of nucleotides in a given sequence be same, right? Like parental DNA. चलिए, can you tell me first of all, ये आपको आना ही चाहिए अभी. Adenine. DNA is a double-stranded structure. When adenine is there on one strand, on other complementary strand, which nitrogen base or nucleotide should be present? Adenine pair with which one? Yes, correct. Thymine, right? Suppose यहाँ पे thymine है, then adenine. Here next, guanine is there, then guanine pairs with the, yes, correct, cytosine. Very good, right? Vice versa. Suppose यहाँ पे cytosine है, तो here guanine. Now, can you tell me between these two, adenine and thymine, which bond is present? Between adenine and thymine, which bond is there? Yes, correct. Hydrogen bond, right? Adenine and thymine, two hydrogen bond. Guanine and cytosine, three hydrogen bonds are there. The numbers are vary, right? Now, so here we are going to learn the DNA replication. Now, one of the term that over here, before going to detail of this process,
that we should understand that semi-conservative DNA, semi-conservative form of DNA. Now, what is the meaning of semi-conservative over here? So suppose this is the parental DNA, one of the cell in which this DNA molecule is there. Now this DNA molecule has to prepare its own replica, right? So how it can be prepare this thing? So first of all, this both the strands get separated. जो hydrogen bonds है ना between these two, they get break, and both this chain of polynucleotide that gets separated. Now after separation, suppose on over here, imagine कि यहाँ पे adenine था और sorry हम ऐसे करते हैं. This is the chain of parental DNA, ATCG, like this, right? Now here the bonds are there, hydrogen bonds. To form a or to replicate themselves, to form a mirror image of that, first step is what? Between this two polynucleotide chain, the hydrogen bonds are there, they get break, and two polynucleotide chains are separated. So on one, this sequence is there, ATCG. On another, this sequence is there, TAGC. Right? Both the chains separated. ये एक one हो गया. This is the another one. Now, this chain, this separated polynucleotide chain has this much information. Okay, first adenine hai, then thymine, then cytosine, and then guanine. Other as thymine, adenine, guanine, cytosine, like that. Right? Now, how it can be formed the double-stranded DNA molecules over here. So, according to this parental strand information, here new strand is synthesized on both the sides. यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा with that thymine and hydrogen bond form. Thymine है तो over here which thing come adenine and hydrogen bond form. Same guanine and here cytosine. Right? Next यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन. बोलिए एग्जैक्टली सेम कॉपी फॉर्म हुआ. देखिए दिस आर द टू डॉटर सेल्स. Daughter, this is the parental one. Check out. From the parental cell, the two daughter cells are during the replication time. Two this daughter DNA molecules are formed. They have exactly same structure. Yes or no? Tell me. Right? Correct. They have exactly same structure. So यहाँ पे we use the semi-conservative. Semi meaning what? Half. Right? Semi meaning half. Conservative, conserve. देखिए in each daughter DNA molecule, one is a parental strand. Yes or no? Exactly like a parent. One is a parental strand. यहाँ पे ये parental strand है. And other one that is totally newly synthesized. This one. One chain is newly synthesized. So one parental strand, other newly synthesized strand, and that's why we use here the half the chain. Only one of the parental chain is there. That's why we call semi. And that parental chain is conserved over here. We use that term semi-conservative DNA replication. See how the DNA replicates themselves and form an exact copy of DNA molecules in the daughter cell. So for that, different hypotheses are given. One of the hypotheses say that's we call conservative, right? Another one that's the disruptive. Another one that's the semi-conservative. Third one is a semi-conservative, right? So out of these three, last one, semi-conservative, which was accepted one, right? What are these that you will learn in a either afternoon session or the next class, right? So we are going to learn directly now how this same DNA replication occur in this semi-conservative form in detail, right? बोलिए up to here clear first semi-conservative of DNA. This term is clear, right?
Okay, 4 students ही है मीट में आज. Only 4 reply. Eva, wake up. नूर, श्रुति. नूर वीडियो ऑन किया है तो रिप्लाई तो दीजिए आप. स्नेहा. चलिए, now next. Need of DNA replication. Why should the DNA replicate themselves? So DNA replicates so that each daughter cell receives same amount of genetic material as that of the parent present in parent cell, right? Now we are going to learn this. First, for DNA replication, as you know, can you tell me in prokaryotes, in bacteria, what type of DNA molecule is present? देखिए मैं यहाँ पे 2 टाइप के DNA ड्रॉ करती हूँ. Right? In another one like this. Tell me. This is the A, this is the B. In bacteria, what type of DNA molecule is present? A or B or A and B both? बोलिए. Write down. One is a circular DNA, other is a linear DNA. So in bacteria, what type of DNA molecule is present? Shape of the DNA molecule linear or circular? Write down. Yes, correct. Okay, that's the which one? A, circular. In bacteria, chapter number 8, 11 standard में आपने learn किया है ये, right? Circular DNA molecules are there. Even this thing you have learned in that mitochondria, chloroplast also. Okay, so this we can say the prokaryotic DNA. This one we can say that the which one? Eukaryotic DNA. Eukaryotic DNA linear one, which is a very long molecule. Prokaryotic DNA, bacteria has a primitive organisms compared to the eukaryote. So they have a simple form of DNA, just circular. Right? Now, इसको हम और एक फॉर्म में ड्रॉ करते देखिए. So this is the, suppose this is a one DNA strand, this is another DNA strand. Right? Now, at a one point, at a one point, इसके कैसे फॉर्म होने चाहिए? 2 कॉपीज फॉर्म होने चाहिए ऐसे सेम ये डीएनए के सर्कुलर फॉर्म में. सो सर्कुलर करना है, so from any one point, from the one point the replication process start. ये 2 चेन सेपरेट होंगे and the new chain will synthesized according to the parental strand information, right? So here the point, ऐसे नहीं कि कोई भी किसी भी प्लेस से वो स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेट करना. नो, a particular point is there. Okay, particular nucleotide sequence is present in a DNA molecule. At this place only the DNA replication begin. And that site, suppose here this nucleotide sequence are there in this parental strand. From this side, the replication process begin. And that point we call ORI, origin of replication. Means यहाँ से वो 2 चेन सेपरेट होना स्टार्ट होंगे in this way, over in this direction, over same in this direction, and at one end both meet with each other, right? So this point we call from where the replication process begin, origin of replication, right? In case of bacteria or in case of viral bacteria prokaryotes, that only one single this origin of replication is present, right? Because it's a very small DNA molecule. In that, not too much amount of that nitrogen bases are present, like a human. Human and other eukaryotes, they have a linear DNA. Yes or no? Right? They have a linear DNA like this. Now, can you tell me what is the length of the DNA molecule in human cell?
What is the length of the DNA molecule in human cell? ये भी आपने लर्न किया है in chapter number 8 nucleus topic. बोलिए. बेस क्लियर होना चाहिए. ध्रुति आप 3 मीटर एटलीस्ट आंसर दी है, बट इट्स गुड. 2 मीटर आंसर है, राइट? -1. 2 meter, 2.2, but I consider that's just 2 meter. 2 meter very long molecule DNA, right? And just imagine कि उसमें सिर्फ एक ही अगर origin of replication point है, right? Like this we draw. Suppose consider this is a hypothetical, yeah, 2 meter long. Now, if 2 meter long molecule and just one point is there over here from one point, okay, that वहां से वो start होगा and gradually move and reach to this one. So it takes a longer period of time to replicate entire DNA, right? So for that, in case of eukaryotes, at a in on DNA molecule, multiple origin of replication sites are there. Multiple origin of replication sites are there, and from multiple points, the both the parental DNA strands that get start separated. बाकी का पोर्शन पहले ऐसे ही रहता है, coiled one. यहाँ से वो separate होना start हो गया. So over here one of the origin of replication site, here origin of replication site, here one, right? And then they further progress. An entire DNA molecules, there both the chains get separated from each other. So first point for understanding the replication, origin of replication. In case of bacteria, virus, circular DNA is there, that's why only single ORI, origin of replication, or we can say that single replicon. In case of eukaryotic cell DNA, it's a very long DNA molecule, linear form, in that multi-replications, multi-replionic are there, or multi-ORI, simple. बोली, आपको ये पॉइंट पहले क्लियर हुआ? Origin of replication. Replication never begin at any point. Particular nitrogen basis sequences are present in DNA molecule. From that sites only that DNA replication begin, right? So that point we call origin of replication. किसी को भी doubt है तो बोलो. If you have any doubt, I can repeat. Good, clear है, then it's good. Next. Next thing, that's the template chain, right? As we have discussed, semi-conservative, that here the parental strand, right? This set parental polynucleotide strands get separated. And on the basis of the information which is present on this parental strand, like adenine hai, so in front of that on another gene thymine is there. So thymine ही आएगा, वो कैसे sure होगा? That information present on parental strand. So this parental strand that acts as a template, right? This one acts as a what? Template chain. So on the basis of the template chain information on another strand of DNA, the nucleotides arrange and form a double-stranded molecule. Template chain, that part of the segment of DNA which provides information either for synthesis of RNA or synthesis of new strands of DNA. ये आपको पता चल गया होगा कि that synthesis for new strand of DNA. RNA के लिए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में आएगा, right? Next topic is which one? Transcription. You know DNA is there. DNA, from that the mRNA is developed. That step you call transcription. So DNA से ही mRNA form होता है, right? So DNA provides this information to form mRNA. That's why we can say that this template either provide what? Information for synthesis of RNA or synthesis of new strands of DNA. बोलिए, template strain का meaning clear हुआ? First ORI.
Second is a template chain or template strand of DNA. Is it clear or should I repeat? बोलिए क्लियर है या रिपीट? ध्रुति अनम्यूट कीजिए। ध्रुति Yes, ma'am. बोलिए आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? Ma'am, how we can derive that that one of the part is guanine or thymine? Is it because of the parent chain? यस देखिए यहाँ पे ये पेरेंटल चेन सिंपल। आपको ये पता है ना सेल डिवीजन के टाइम पे कि वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल, यस और नो माइटोसिस करते हैं तो? ध्रुति ध्रुति Yes, ma'am. हाँ टेल मी, माइक ऑन ही रखना। वन Okay, सेल ma'am. ओके नाउ सो वन पेरेंटल सेल में न्यूक्लियस भी तो है, हाँ. डॉटर में भी न्यूक्लियस है। तो नाउ पेरेंटल स्ट्रैंड राइट गिव देयर डीएनए टू देयर डॉटर सेल। तो ये Okay. पेरेंटल स्ट्रैंड कैसे दो कॉपीज फॉर्म कर देगा? इसके पास तो एक ही कॉपी है, यस और नो? Yes, ma'am. राइट अगर आपके पास एक चॉकलेट है और आपके सपोज आपके जो सिबलिंग्स सिबलिंग्स दो है और आपको एक ही चॉकलेट दोनों को देनी है, एंटायर हाफ करके नहीं देना है, डीएनए को हाफ करके नहीं दे सकता, अदरवाइज जीन स्कैटर्ड हो जाएंगे, राइट? सो आपको Yes, पहले ma'am. और एक चॉकलेट परचेस करना पड़ेगा। Yes. तो यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा? पेरेंटल डीएनए को फर्स्ट इट शुड मेक टू कॉपीज ऑफ डीएनए, यस और नो? सो वो कैसे बनाएगा? तो पहले तो जो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है राइट, जिसमें एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन एडेनिन लाइक दैट विद देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फर्स्ट दिस सेपरेट आउट, एक पे एडेनिन आ गया, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन, ये स्ट्रैंड हो गया। नाउ अनदर इज दिस वन, थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन। अप टू हियर क्लियर? Yes, ma'am. ध्रुति जियाश्री बोलिए क्लियर? Yes, ma'am. राइट तो अभी एडेनिन है, यू नो वन थिंग इज देयर ऑलरेडी बाय द चारगाफ्स रूल, विल्किन फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट, वाटसन एंड क्रीक मॉडल, दिस थिंग हैव ऑलरेडी रिवील्ड दैट कि एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है? थाइमिन, right? Bind meaning here the base pairing, we can say that always it pairs with the thymine, thymine pairs with the adenine, guanine है तो cytosine, cytosine है तो guanine, thymine है तो adenine, like this। बोलिए ध्रुति जी आश्री क्लियर है अप टू हियर? Yes, ma'am. तो ये अदर स्ट्रैंड के ऊपर थाइमिन ही आएगा फर्स्ट, देन साइटोसिन ग्वानिन, दैट डिपेंड्स ऑन विच स्ट्रैंड? DNA. Parental. पेरेंटल वन, ये पेरेंट के ऊपर से आएगा, यस और नो? Yes, ma'am. Parental strand gives the information for synthesis of new strand of DNA. Can I say that? Yes, ma'am. Right? So that's why this one we consider as a template strand. बोलिए clear है? Yes, ma'am. Thank you. Dhruti clear? Yes, ma'am. Okay. जियाश्री Yes, ma'am. और किसी को डाउट है तो बोलो। Right. चलिए next. So first we have learned this origin of application. Next that's the template strand. चलिए. After that next that now जो अरेंज होता है एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, राइट? अभी एडेनिन के साथ थाइमिन थाइमिन है तो ये थाइमिन तो कहाँ पे प्रेजेंट है? सी दिस थिंग अकर्स इन न्यूक्लियस, यस और नो? डीएनए डुप्लीकेशन प्रोसेस अकर्स इन न्यूक्लियस, ये तो पता है ना आपको, राइट? नाउ इन न्यूक्लियस जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियस द liquid part is there that we call the nucleoplasm. Inside the nucleoplasm ये सब ऑलरेडी होता है, that thymine, guanine, cytosine, adenine, right? These things are already present. Now
And one by one, according to this parental strand, these molecules come and form a pair. When this molecule comes, they come in a which format? Triphosphate. You know, nitrogen base plus sugar plus phosphate. पता है ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला? यस और नो? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म. And in the I think first lecture you have learned that. Suppose यहाँ पे एडेनिन है, हम डीएनए के लिए कर रहे हैं, तो कैन यू टेल मी एडेनिन प्लस दिस डीऑक्सीराइबोस प्लस 1 phosphate, what you call? Deoxyribose plus phosphate, what you call that? Correct. वंशिका डीऑक्सीएडिनोसाइन करेक्ट. फॉस्फेट कहाँ गए? हर्षिल. आप सब लोग हाफ लिख रहे हो. हर्षिल. डीऑक्सीएडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. वंशिका नाउ करेक्ट. Right? Deoxyadenosine monophosphate. That you should write down. Right? That's the entire form. Now, और दो फॉस्फेट ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट. सो नाउ यू कॉल व्हाट? डीऑक्सीएडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. यस और नो? Right? With the help of phosphorylase enzyme. Okay, which enzyme? Phosphorylase. Because phosphate ऐड करना है, phosphorylation reaction में phosphate चाहिए. So in this deoxyadenosine monophosphate है और guanosine monophosphate है और deoxycytidine monophosphate है और deoxythymidine monophosphate है. This all actually present in nucleoplasm in a which format? That triphosphate. deoxyadenosine triphosphate. deoxyadenine मीन्स वो एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है. जो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म है दैट्स देयर एक्टिवेट फॉर्म. राइट नाउ, सो व्हेन दिस थाइमीन, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एडेनिन के सामने थाइमीन आएगा फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म. सो दैट इज कम, कैन यू टेल मी दैट इज कम इन विच फॉर्मेट? डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. कौन से फॉर्म में होगा यहाँ पे? बोलिए. डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा और डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. ध्रुति अनम्यूट कीजिए. ध्रुति अनम्यूट. Am I audible? Jiyashri? Yes, ma'am. Right. Tell me. What I saying you that when single phosphate is there, we call deoxy. Suppose adenine is there, consider thymine. Deoxythymidine monophosphate. But actually वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है. राइट? सो वी कॉल डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट. सो यहाँ पे जब न्यूक्लियोप्लाज्म में से थाइमीन आएगा टू बाइंड्स विथ एडेनिन, इन विच फॉर्मेट? मोनोफॉस्फेट, Triphosphate. ट्राइफॉस्फेट. राइट? ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में तो आता है, बट जब लिंक होना है ना यहाँ पे, दैट इज मोनोफॉस्फेट. सो व्हेनेवर ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में दैट come to make a pair with this adenine, but to form these hydrogen bonds energy is required, right? Between this adenine and thymine, and to make hydrogen bond energy is required. And for that, from this deoxythymidine triphosphate, 2 phosphorus molecule released, and that means वो bonds break होंगे, and from that the energy release. Right? 2 phosphate molecules क्या हो जाते हैं? Bond will break. So ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके? Deoxythymidine monophosphate. Sorry, this one become what again? Deoxythymidine monophosphate. Right? After that,
deoxythymidine monophosphate, right? Now फर्स्ट आया था कौन से फॉर्मेट में, ट्राइफॉस्फेट, पर जब लिंक होता है विद दिस एडेनिन टू विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, सो दिस ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू व्हिच फॉस्फेट मॉलिक्यूल, मोनोफॉस्फेट। बोलिए ये क्लियर हुआ आपको पहले? यस और नो? दिया, फॉरम, जिया, श्री, खुशी, राइट, हर्षित। So deoxyribonucleoside triphosphate, they acts as a what? Substrate. Substrate क्यों बोलेंगे हम? कि सपोज पेरेंट में एडिनिन था, न्यूक्लियोप्लाज्म में से थाइमिन आ रहा है, डीऑक्सी लाइक थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, सो थाइमिन यहाँ पे एज अ सबस्ट्रेट आया टू मेक अ बॉन्ड विद दिस एडिनिन, एंड फिर उसमें से फॉस्फेट रिलीज होके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसका ड्यूअल पर्पस है यहाँ पे, ड्यूअल फंक्शन, cake acts karta as a substrate. Second is what? Energy. It provides energy for polymerization reaction, right? By release that two phosphate molecules from that, means break their bond and energy released. देखिए ये फॉर्मेट में एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पे क्या हुआ? ट्राइफॉस्फेट है, ये सारे ट्राइफॉस्फेट डी, राइट? ये है पायरोफॉस्फेटेस। Which one? Pyrophosphatase. Pyrophosphatase. See, earlier I have word given that enzyme name phosphorylase. Note down everything, not given in your textbook. Textbook में सिर्फ 2-3 lines दी है, nothing else for given. Phosphorylase. Phosphorylase का function क्या होगा? कि मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। deoxy adenosine monophosphate converts into deoxy adenosine triphosphate. Same way another nitrogen bases. Now reverse अगर करना है, that triphosphate converts into monophosphate, so for that this enzyme required, pyrophosphatase, right? Pyrophosphatase helps in what? To break, suppose this is the deoxy एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एंटर, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन शुगर, एंड यहाँ पे फॉस्फेट है, एक ही फॉस्फेट है, देन वी कॉल डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, बट व्हेन टू मोर फॉस्फेट join we call now triphosphate. This phosphate bond break, phosphorus release, this phosphate bond break, another phosphate release, so two phosphorus released, right? And with that their bond is also break, from that the energy is released. That energy used for which purpose? To make a bond between this adenine and thymine, guanine and cytosine, means complementary chains, to connect this complementary chain. Boliye yes or no? Is it clear? Right. जो energy released होता है in terms of ATP. Now after that next point, ये हम बाद में करेंगे. Now we are going to learn this mechanism, right? This is the DNA molecule in this way, right? Now over here, okay, can you tell me from which point the replication process begins? Boliye. From which point the replication process begins? That point you call what? From which the replication begins? Khushi, the origin only नहीं लिखना है, आस्था मत लिखा है. Harshil, origin of replication, right?
origin of replication, or you can say that ORI small. Suppose here the ORI point is there, right? Here the ORI, origin of replication. So from this point, now the replication process begins. Means from this DNA, now two DNA molecule formation process begins, right? Now, in that, देखिए यहाँ पे कि here the original or origin of replication point is there. From this point, first of all, that both the DNA chain, complementary chain, they start separating from each other. Now, to separate or to move away from each other, for that, first thing is required what? Can you understand? First thing is required what over here? That to break the hydrogen bonds, right? यहाँ पे जितने nitrogen bases हो गए, over here nitrogen bases are there. Between them the hydrogen bonds are there. So break these hydrogen bonds, right? And for break these hydrogen bonds, the enzyme is required. That enzyme name helicase. Helicase or another name unwindase. Unwind करता है. ये DNA molecule helical form में, wind form में, right? So उसको unwind करना है. This is the first enzyme. Remember, right? This is the first enzyme that reach at the point of ORI. Origin of replication पे वो first आएगा, and then it start break the hydrogen bonds to unwind the two strands of DNA. Right? Now, next thing is what? So when at this origin of replication point, the separation of two DNA strands start. So at that point, like this, the structure is formed. This we call replication bubble, or okay, this one we call replication bubble. It's a bubble like. So this one we call replication bubble. Now, replication now occur in this direction also and this direction also. On both the direction replication occur, right? फिर यहाँ के जो हेलिक्स है वो ओपन होंगे, फिर यहाँ के हेलिक्स ओपन होंगे, यहाँ के सेम वे ऑन अदर साइड हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से हेलिकेज ये डायरेक्शन में मूव करेगा, देखिए, right? Over here helicase move in this direction, here helicase move in this direction, right? So helicase that unwind the DNA or break the hydrogen bonds. Now each half, आप half part देखो, this one, each half of this replication bubble looks like, देखिए यहाँ पे, it's look like this, like a fork. Yes or no? Like a fork, उसका जो shape create होता है. That's why we call it's a replication fork. This one we call what? Replication fork. बोलिए, replication fork समझ में आया? हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन समझ में आया? If you want, I can repeat. Harshil, clear? Right. Dhruti, Jiyashri, Khushi, Diya, Forum. Right. Noor, yes. Vanshika, good. चलिए. Now next. So imagine कि DNA है, इसके ऊपर एक specific nitrogen bases के sequence है. Over there, that site we call origin of replication. So nucleus में एक enzyme है that we call the helicase. That helicase comes and binds with this ORI. And then it starts separating these two DNA strands. How? By break down the hydrogen bonds between them. And by that way it forms what? Replication fork. Y-shaped structure. Next.
आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉलिक्यूल कम, ये सीक्वेंस में ही लर्न करना है कि फर्स्ट ओआरआई के बाद फर्स्ट एंजाइम कम, दैट्स द हेलिकेज. नाउ आफ्टर हेलिकेज, जैसे ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, राइट, thymine, adenine, guanine, cytosine, both are separated. Now in between them, no hydrogen bonds are there. But after separation, see, these molecules have an attraction with each other. Thymine जैसे ही adenine देखेगा ना strand में, उसके जाके that it will form a bond, hydrogen bond, and again try to make a base pair over here. But this thing is protected by which one? Single stranded binding proteins. On this sides, right, on the sides of this DNA strand, which are separated now from each other, this protein molecules bind. And these protein molecules stabilize the single strand so that they remain separate from each other. Separation is required, otherwise new chain cannot be formed. So to remain separated, for that this SSBP, remember full form, single stranded binding protein, is required. These molecules bind over here, right? पहले हेलिकेज आया, हेलिकेज ये डायरेक्शन में भी मूव करेगा. सेम वे SSBP hold these strands that they can remain separate with each other. बोलिए SSBP का रोल क्लियर है? We will go in this way. You have to tell me in it after each step that is this step is clear or not. Diya, unmute. Yes, ma'am. Oh, loudly, huh? Your voice is not coming. Ma'am, hello, ma'am. हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए. Tell me, क्या नहीं समझ में? ये SSBP एक बार रिपीट करो ना. Now, okay, चलिए. ये चेन सेपरेट हो गए by this helicase, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुआ, ये क्लियर है ना? Yes, ma'am. राइट. सो यहाँ पे एडेनिन है ऑन वन स्ट्रैंड, तो एग्जैक्टली वहां पे सामने थायमिन होगा, बिकॉज दे आर स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री ना. ग्वानिन है, साइटोसिन है तो ग्वानिन. So here, if we want to make over here new strands according to this template to form a daughter DNA, so for that these two chains should be remain separated from each other. Yes or no? Yes. Right? So यहाँ पे अगर ये protein molecules bind हो जाएंगे ना, तो this protein molecules remain, that helps in what? To stretch this strand so they can remain separated from each other. बोलिए. Okay. Yes, ma'am. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का काम ही है कि जो स्ट्रैंड्स है उसको जो अनवाइंड स्ट्रैंड है वो अगेन वाइंड हेलिकल फॉर्म में ना आ जाए. इज इट क्लियर? Clear, ma'am. राइट. चलिए नेक्स्ट. Now see, I'm explaining to you one thing. सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए. All of you, switch on your video fast. Fast. See, वायर है घर पे, आपके पास भी ये सब वायर होंगे, राइट? टू कलर इंडिकेट्स दैट टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, राइट? रेड एंड ब्लैक. तो इसको हम ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में इमेजिन कि ये DNA, right? Now this DNA molecule that performing replication. So यहाँ पे क्या होगा? For replication, suppose start, मैं यहाँ पे starting point से ही करती हूँ, over here, right? So both the chains get separated. ये हुआ है, yes or no? Both the chains get separated from here, this point where the origin of replication is there. Now अगर मैं ये चेन को ऐसे छोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? देखिए वाइंड हो रहे हैं अगेन ऐसे. बट सपोज
if I give if I give support like this, like a SSBP function करता है into the nucleus. Imagine यहाँ पे SSBP है, यहाँ पे SSBP है, so they remain open. Yes or no? Right? They remain open. Now, this is the entire DNA, right? एक साइड पे अगर ये अनवाइंड हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए केयरफुली, दैट ऑन द पोस्टीरियर साइड, ये पार्ट में आप देखोगे ना तो टेंशन क्रिएट होता है. कैन यू मेक आउट दिस थिंग? जैसे जैसे ये पोर्शन अनवाइंड हो रहा है over here, that in this part on other hand that's the tension is created, and due to this what happen कि ये हेलिक्स जो पीछे के है डीएनए मॉलिक्यूल्स के, वहां पे ट्रबल क्रिएट होगा, राइट? डीएनए स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वन हेलिक्स का जो पर्टिकुलर लेंथ है दैट विल बी डिस्टर्ब. So to avoid this thing, that one more enzyme is there, that enzyme is which one? That we call topoisomerase. Right? For that the enzyme to release this tension from the posterior ends of this DNA molecule, right? Sorry. For that that enzyme is there. That enzyme you call topoisomerase. So first the helicase. Helicase के बाद जो आया था, that's the which one? After the helicase, next is the SSBP. After the SSBP, see, due to unwinding, supercoiling occur, more coiled, more helix formation, right? At the end of the DNA, opposite to Y, that fourth part, replication fork. So tension, to release this tension, no doubt, जो suppose ये helix जो है, this is the one helix, ये open हो रहा है, and यहाँ पे bonds break हो रहे हैं. इसका इफेक्ट जो पोस्टीरियर साइड पे, ये साइड्स पे जो डीएनए हेलिक्स है, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, राइट? अदरवाइज प्रॉपरली डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा. सो टू रिलीज दिस टेंशन, one enzyme is there over here that we call topoisomerase, right? Topoisomerase क्या कर देता है? It does reverse coiling, right? It does the reverse coiling. प्रोकैरियोट में ऐसा एक होता है डीएनए गायरेस. इफ प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के लिए अगर कोई पूछे, देन रिमेंबर डीएनए गायरेस. यूकैरियोट में ये टेंशन रिलीज करना किसका काम है? टोपोआइसोमरेस. बोलिए, ये क्लियर हुआ? Anyone have a doubt in this part? Unwinding, topoisomerase, gyrase, supercoiling, right? Next part. So new strand over here, and for that, first, what thing is called RNA primer. Sequence याद रखना, ORI, helicase, SSBP, topoisomerase, and now the next is what? Formation of RNA primer. देखिए, in DNA, sorry, in nucleus, these enzymes are present. DNA polymerase, right? DNA polymerase enzyme are present, but this DNA polymerase cannot initiate the replication. First, which enzyme come? RNA polymerase. RNA polymerase or primase, right? That form primer. Primer पता है आपको? घर पे कलर कराते हैं ना तो यूज होता है ये टर्म. यस और नो? प्राइमर. प्राइमर ये वॉल है, वॉल के ऊपर प्राइमर आता है, प्राइमर के ऊपर कलर आता है. यस और नो? तो प्राइमर का रोल क्या हुआ? टू कनेक्ट दिस टू थिंग, वॉल एज वेल एज कलर. यहाँ पे क्या होगा कि मेन पेरेंटल स्ट्रैंड है. नाउ हियर द न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज फॉर्म, बट टू इनिशिएट, इनिशियली उसको बाइंडिंग देना पड़ेगा. दैट बाइंडिंग इज गिवन बाय व्हाट? प्राइमर, right? And they are RNA primer. RNA primer meaning what over here?
कि इसके ऊपर एडिनिन instead of thymine uracil is present, AUCG UCG like this sequence is there, right? Again ये सेम ही होगा, ये भी देखिए सपोज पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, तो इनिशियली जो आरएनए प्राइमर फॉर्म हो रहा है, तो एडेनिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडेनिन विथ दैट यूरासिल, हियर एडेनिन, हियर ग्वानिन, and then the DNA nucleotide formation start, means joining start. पहले RNA primer, RNA molecule form, then DNA, which helps to stabilize the strands and helps in formation of this new strand. Without RNA polymerase or this primase enzyme, DNA polymerase cannot become active, right? So when the chains get separated, जो supercoiling है, that is prevented by this topoisomerase. Next, RNA polymerase enzyme come. RNA polymerase or primase enzyme come, and that helps in to synthesize the RNA primer, which is a very small strand. इसके अंदर कितने nucleotides होंगे? Approximate 4 to 12. 4 to 12 nucleotides are there that form a RNA primer. RNA primer term clear है? RNA primer. Parental, right? Now here the replication fork is formed, right? Now gradually strand, ये chain कैसे open होगा? In this direction. फिर ये helix open होगा, then this one like this. Okay? Now देखिए यहाँ पे पहले हेलिकेज आया, हेलिकेज ग्रेजुअली पहले मूव करेगा, जैसे हेलिकेज मूव करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होगा, फिर इसके पीछे पीछे ये आरएनए प्राइमेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमर. This one form what? RNA primer, which is a short polynucleotide chain. Now I am going to explain a very important concept related to this thing. Please understand. देखिए यहाँ पे we can make like this. कि दोनों चेन्स सेपरेट हो गए. Now you know DNA has an anti-parallelity. 5 prime 3 prime है, तो another strand के 5 prime यहाँ पे होगा, 3 prime यहाँ पे, right? ये 5 स्टार करके लिख दो. That replication occurs only in a one direction, 5 prime to 3 prime. Means newly synthesized chain only in a this direction, 5 prime to 3 prime. New polynucleotide chain will be synthesized in this direction only, 5 prime to 3 prime. Right? Now देखिए यहाँ पे हेलिकेज है, हेलिकेज ये डायरेक्शन में मूव करने वाला है, राइट? फर्दर 3 prime to 5 prime over here, 5 prime to 3 prime. Now so for this thing, इसका ये 3 prime है, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का यहाँ पे क्या होगा? 3 prime और 5 prime, टेल मी. इसका न्यू सिंथेसाइज होगा यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ओनली नाउ. टेल मी. ये ऑलरेडी एक पेरेंटल स्ट्रैंड का डीएनए है, राइट? नेक्स्ट हियर newly synthesized DNA strand is there on the basis of the information getting from this strand. So parent का ये 3 है, 3 prime. तो newly synthesized का यहाँ पे कौन सा एंड होगा? 3 prime और 5 prime. बोलिए. दिया अमीन, करेक्ट. नेक्स्ट है, that's the
यस, वंशिका, हर्षिल, करेक्ट। कौन है जिसको ये कंसेप्ट नहीं समझ में? देखिए पहले तो यहाँ पे 5 प्राइम होगा, दैट्स द कंफर्म, बिकॉज इमेजिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये पूरा एक स्ट्रैंड हुआ, ये न्यूली सिंथेसाइज है, तो ये दोनों तो फिर सेपरेट हो गए, फिर यहाँ पे भी तो एक और है लाइक दिस, फिर इसका है न्यूली सिंथेसाइज, तो वैसे 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ऑलरेडी पेरेंट का तो है ही यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम, सो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 1 डीएनए मॉलिक्यूल। सेम ऑन अदर साइड, यहाँ पे सपोज 3 प्राइम है तो इसका 5 प्राइम। बोलिए ये किसको नहीं समझ में आया है अभी भी? टेल मी। क्लियर? इज इट क्लियर? Right. Now, so helicase here. Helicase move in this direction, right? One more time I made this. Helicase move in this direction. This is the 3 prime 5 prime, right? Now, tell me. देखो मैंने प्राइम चेंज किया है यहाँ पे, पहले जो लिखा था उससे। You have to just follow one thing, that replication occur in this direction. देखिए न्यू चेन का यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा, पेरेंट का यहाँ पे 3 प्राइम है, तो न्यू चेन का क्या आ जाएगा 5 प्राइम, राइट? सो ये तो हेलिकेस जैसे जैसे मूव कर रहा है वही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यस और नो? हेलिकेस जैसे मूव करेगा, सपोज हेलिकेस आफ्टर सम टाइम ओवर हियर, तो न्यू चेन भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। इज इट क्लियर? पहले ये बताओ, राइट? नाउ सो 5 प्राइम न्यू चेन, देखिए parental strand, listen my words carefully. Parental strand means a template strand which has a polarity that 3 prime to 5 prime. ये स्ट्रैंड आप ऑब्जर्व करो तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, न्यू सिंथेसाइज ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। Parental strand has a 3 prime to 5 prime polarity. That strand you call continuous or a leading strand. That you call what? Continuous or leading strand. Why? Because जैसे जैसे हेलिकेज मूव होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन कंटिन्यूअसली फॉर्म विदाउट ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शन। ये समझ में आया? Why we call continuous, right? टेम्पलेट चेन का पोलैरिटी क्या होगा व्हेन कंटिन्यूअस इज देयर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट? जहां से रेप्लिकेशन बिगिंस होता है ना, देखिए फिर आप बोलोगे तो मैडम यहाँ पे भी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, राइट? नो, रेप्लिकेशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका 5 प्राइम यहाँ पे, इसका यहाँ पे आएगा, और इसका प्रोसेस डिफरेंट है, सो ये कंटिन्यूअस में जा रहा है, राइट? सो इफ न्यूली चेन सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, तो उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, and that you call leading strand. Harshil, clear? Diya, Diksha, Noor, then Vanshika, Astha, Gokhale, Forum, Neha, बोलिए. Right. Now next. So ये continue, new chain synthesize continuously because it moves in a same direction where the helicase move. Now the next is which one? That this strand, this one, 3 प्राइम, ओके ये। नाउ तो इसका यहाँ पे हेलिकेज है, हेलिकेज तो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यस और नो? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसका 5 प्राइम यहाँ पे आ जाएगा और 3 प्राइम यहाँ पे होगा, यस और नो? पहले ये क्लियर है? पेरेंट का 3 प्राइम तो डॉटर का 5 प्राइम, पेरेंट का 5 प्राइम तो डॉटर का 3 प्राइम। पहले ये कंसेप्ट क्लियर है?
Okay. Now, so direction तो ये है 5 prime to 3 prime. I told you that. Remember this line. Replication occurs only in this direction. That's the 5 prime to 3 prime. So on, see, one more time making this diagram, that यहाँ पे तो हमें क्या मिला, ये पेरेंट का 3 प्राइम 5 प्राइम पोलैरिटी है, तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड सीक्रेट फॉर्म करेगा, नॉट सीक्रेट, माय वर्ड्स रॉन्ग. नेक्स्ट यहाँ पे पेरेंट का पोलैरिटी क्या है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. हियर सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा. इनिशियली इमेजिन के हेलिकेज यहाँ पे, तो इतना ही डीएनए यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है. नाउ दिस हेलिकेज मूव ओवर हियर, तो ये पोर्शन तो बाकी रहेगा. अगेन यहाँ पे ये फ्रेगमेंट फॉर्म होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम का. Like this you have to understand, imagine for entire this strand newly daughter DNA is formed in this fragment form, right? Because this fragment, see, this DNA replication करी ना 5 prime to 3 prime direction. So यहाँ initially जब हेलिकेज यहाँ पे था तो इतना DNA replicate हो गया parental strand के साथ, right? Next, now this helicase that come at this place, so this much DNA now replicate. So first fragment, second fragment, like in a fragment form on another strand, that's the DNA, newly synthesized DNA strand is formed. So that we consider as a which one? Discontinuous. That synthesis we call discontinuous. Here we call continuous, right? And uska jo template hota hai, that we call the leading. Here we can say that it's a leading strand. Here we call what? Lagging. This newly synthesized. राइट, बिकॉज वो फ्रेगमेंट में है. लेगिंग आप बोलते हैं ना, मैम योर वॉइस इज लेगिंग, राइट, बिकॉज प्रॉपर नहीं आता इन पार्ट्स फॉर्म. सो व्हाई, देखिए डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस. बोलिए, ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हो गया, देन इट्स इजी टू नाउ अंडरस्टैंड द फर्दर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. बट ये नहीं समझ में आया तो बाकी का तो ऊपर से ही जाने वाला है. टेल मी, क्लियर? Astha Gokhale, yes. Next, Diya Amin, yes. Good. Next, Jia Shri Patel, yes. Harshil, yes. Next, Vanshika Noor, yes. Okay. Next, Khushi. Then one more. Dhrutisha, yes. Chaliye. Diksha, yes. Good. बाकी का क्या है, लर्न नहीं किया या रिपीट करना है? बोलिए. लर्न नहीं किया, दैट्स योर प्रॉब्लम. रिपीट करना है तो बोलो, आई कैन हेल्प यू. चलिए, so now you can understand this diagram very well. देखिए ये पेरेंट स्ट्रैंड है, राइट, इसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. कैसे डिसाइड करोगे? जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये 5 प्राइम है तो आपको ये डायरेक्शन में ही देखना पड़ेगा कि इसका 3 प्राइम है. यहाँ पे ऐसे आता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपको ऐसे दिखना पड़ेगा कि ये पेरेंट का 3 प्राइम आएगा, राइट. हियर फ्रॉम सेम डायरेक्शन, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो ओवर हियर अगेन सेम, पेरेंट का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, here opposite, right? If parent has 3 prime to 5 prime polarity, you call leading strand, and if 5 prime to 3 prime, lagging strand formation, right? Now next, so first, if you recall that DNA, चलिए आप quickly sequence बोलिए. First, which enzyme come for replication? Quickly, first which enzyme come for replication? Correct, helicase.
right? For to break down the hydrogen bonds. After that, next which enzyme? Okay, SSBP is a just molecule, but after that SSBP, that's correct. Next, which enzyme? Enzyme. Bolo. Topoisomerase, excellent. To release that tension, जो हेलिक्स ओपन करने के टाइम पे अदर साइड्स पे होते हैं, राइट? नेक्स्ट विच एंजाइम? टोपोइसोमरेज ने अपना काम कर दिया. नाउ द टाइम फॉर यस प्राइमेज, और प्राइमेज का अनदर नेम है आरएनए पॉलीमरेज, दैट फॉर्म आरएनए प्राइमर. यस, करेक्ट. नेक्स्ट, आफ्टर प्राइमेज, नाउ द टाइम that DNA polymerase enzyme became active. आरएनए पॉलीमरेज के बाद याद रखना डीएनए पॉलीमरेज, राइट? चलिए, now so now the time that's the DNA polymerase enzyme. Particularly which one? DNA polymerase 3. See, in case of prokaryotes, ये extra information है for NEET. In case of prokaryotes, that 3 types of DNA polymerases are there. DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, and DNA polymerase 3. Right? DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, and DNA polymerase 3. Now, in that DNA polymerase 1 and 2, they are known as a DNA repairing enzymes. 1 and 2, they are known as what? DNA repairing. अभी DNA का भी रिपेयर देखिए, मैकेनिक, राइट? Generally, very less chances are that कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सपोज यहाँ पे एडिनिन है और बाय मिस्टेक यहाँ पे सपोज ग्वानिन, साइटोसिन, और अगेन एडिनिन कैन कम लाइक दिस बाय मिस्टेक. सेल से भी मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन से होता है, सेल से भी होता है, राइट? बाय मिस्टेक, बट दिस चांसेस आर वेरी लेस. ओके, देयर दिस फ्रीक्वेंसी is 1 in 10,000. Now, so whenever if this type of mistake is done by this DNA molecule during this replication time, so for that, first of all, this DNA polymerase 1 and 2, they remove this mismatch nucleotide. जो mismatch होते हैं उसको remove कर देते हैं. And DNA polymerase 3 क्या करता है? DNA polymerase जो है, right over here, that helps to make it correct, right? So if something goes wrong inside that during that replication process, DNA polymerase 3 has the sense, right, to find out this thing. Next, so DNA polymerase 1 क्या करता है 1-2 repair में? It removes the mismatch or wrong nucleotide if present and synthesize the correct DNA molecule, right? 3 sense करता है कि whether it's a correct or wrong. If wrong, 1 and 2 come and repair this thing. जो wrong material है, wrong है, उसको remove कर देता है and replace with the correct one. बोलिए 1, 2, 3 समझ में आए? This we can say that as a proofreading. This one is a one type of proofreading. Now, next thing that in bacteria or in prokaryotes, that DNA polymerase 1, 2, 3 is there. This DNA polymerase 3, that's the main enzyme that is responsible for DNA replication. Remember, right? And this DNA polymerase enzymes are also known as Korenberg enzymes. They are known as a Korenberg enzymes because they are discovered by Korenberg. Right? 1 and 2 repair के लिए याद रखना 3 sense that.
In case of यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के 7 सब यूनिट्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड kappa. Sorry, not 7, my mistake. 5 only, huh? DNA eukaryotes have 5 types of DNA polymerase. 5 types: alpha, beta, gamma, delta, epsilon, and epsilon. Up to that, alpha, beta, gamma, delta, and epsilon. Yes. In some of the book, when you read that in that kappa k लिखते हो ना, kappa, that is also given, but exactly actually the 5: alpha, beta, gamma, delta, and epsilon. Right? They perform different function. Like alpha जो है in eukaryotes that initiate the replication. अल्फा से इनिशिएट होता है, फिर बीटा जो है वो डीएनए रिपेयर करता है, राइट? जैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए 1-2 रिपेयर करता है, इन यूकैरियोट्स बीटा, डीएनए पॉलीमरेज का बीटा यूनिट दैट repairs the DNA if any mistake is there, right? चलिए, like that others are there, just remember this subunit's name, no need to go in detail. Now next, so action of DNA polymerase occurs in a which direction? 5' to 3'. As we have discussed, template strand का polarity, parent strand का polarity 3', 5' है, तो वहां पे continuously newly strand form होता है without any interruption, so we call continuous replication. Okay, that we can say the leading strand also. And the template strand with 5' to 3' polarity over there in a fragments form the DNA replication occur, that we call discontinuous, right? Now see, डीएनए के लिए यहाँ पे है 3', 5', 3', 5'. हेलिकेज मूव इन दिस डायरेक्शन, सो यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का 5' हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन में क्या होगा? रेप्लिकेशन, राइट? नाउ as I told you, to replicate the DNA strand, RNA primer is required, right? So first over here at this point RNA primer come, right? And then DNA polymerase enzyme elongate one by one. Suppose यहाँ पे एडिनिन है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में से थाइमिन को यहाँ पे सेट कर देगा, फिर थाइमिन है तो उसको एडिनिन के साथ करवाएगा सेट, राइट? सो बाय दिस वे elongation of this nucleotide, newly synthesized nucleotide chain can be just a second, elongation of that newly synthesized chain by DNA polymerase. Initially RNA primer का वो शॉर्ट सीक्वेंस बनाता है 4 to 12 नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स के. आफ्टर दैट एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल शुड बी रेप्लिकेट, सो दैट थिंग इज डन बाय व्हिच वन? डीएनए पॉलीमरेज, राइट? डीएनए पॉलीमरेज elongate this replication. Now for this strand, this one, यहाँ पे ये साइड पे होगा 5', ये साइड पे हो 3', right? When helicase present over here, then helicase now present at this array, helicase that present over now in this way, sorry, now helicase over here. So again यहाँ पे क्या होगा? न्यू फ्रेगमेंट फॉर्म होगा 5' to 3'. Every time to form a DNA, it needs a primer. Understand? Every time to form a this 5' to 3' strand, newly synthesized one, right? It needs a primer. यहाँ पे can you tell me for this strand how many primers are required to form a leading strand or continuous strand? How many primers are required during replication? बोलिए 1, 2,000 कितने? Write down first. Quickly, हाँ, टॉपिक कंप्लीट करना है. हर्षिल अनम्यूट. Yes, ma'am. Harshil, tell me, how many primers required if we want to
is this chain? मैम don't know. Why? Tell me. प्राइमर यहाँ पे फर्स्ट फिक्स होगा कि नहीं? स्टार्टिंग में पहले प्राइमर आएगा, Yes ma'am. right? So once the primer is there, now the DNA replication continue for this strand, yes or no? Yes. So now can you tell me how many primer required? Bole. 1. Yes, one. Right? Now, Artha Gokhale, unmute. Yes, ma'am. Can you tell me for this strand, how many primers required? Multiple, because more fragments will be formed. Yes, yes, very good. Because जितने 5 prime to 3 prime के fragments, उतने क्या होंगे? RNA primer. बोलिए, आप लोगों को ये clear हुआ? And these fragments of DNA in a patches form, which are formed on this discontinuous, that you call Okazaki fragments, that is discovered by Okazaki scientists. So name given Okazaki fragments, right? They are formed only on this linking strand, right? Remember this one, 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime. So here the bidirectional, from the origin of replication, this process extends in both the direction. Up to here clear or any doubt? इतना आपको क्लियर है? Right. Now, this leggings and Okazaki fragments are formed for entire DNA. Then over here continuous strand is formed. यहाँ पे एक प्राइमर था, यहाँ पे like that many primers are there ना, यहाँ पे एक प्राइमर, यहाँ पे एक प्राइमर. इमेजिन कि ये स्ट्रैंड यहाँ तक है, यहाँ पे और एक प्राइमर आ जाएगा फिर. नाउ ये तो आरएनए से बना है प्राइमर, राइट? आरएनए से प्राइमर बना है और उसमें तो यूरासिल कंपोनेंट है व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएनए. So this thing should be removed, and for that, which one has this enzyme DNA polymerase 1, right? DNA polymerase 1, this enzyme over here, remember, that helps in to remove the RNA primer and replace with DNA fragment. Replace with what? DNA fragment. Suppose RNA primer का sequence ये है AUG, तो DNA का क्या आ जाएगा? ATG, थाइमिन, यूरासिल की जगह पे थाइमिन, right? So now we can say that now this one become a DNA. Arey, this part become DNA, but still they are in a fragment form. Yes or no? So at the end, what thing is required? देखो ये तो continuous में है. This one is a continuous. इसको कोई trouble नहीं. Trouble क्या पे है? At this strand. So first DNA polymerase 1 come. It removes this RNA primer and replace this DNA fragments. Now the time to join these fragments and form an entire DNA, that's the strand. Joining के लिए always remember which enzyme? Ligase. DNA ligase joins newly synthesized DNA fragments. जितने भी fragments थे, now all these are joined with this DNA ligase, right? By making that phosphodiester bond between them and form an entire DNA strand, continuous like. बोलिए ये क्लियर हुआ आपको? Yes or no? DNA polymerase 1 का फंक्शन, ligase का फंक्शन, और ऐसे रेप्लिकेशन होता है पूरा. DNA polymerase 3, as we have discussed, it can sense the wrong one during replication. DNA polymerase 1 removes the mismatch or wrong nucleotide.
main, that's a polymerase 3. Hmm. After that, see this one. First replication form हुआ है at this position, right? Now, अगर आपको क्या फॉलो करना है, आपको लगेगा कि अभी जो मैडम ने डायग्राम ड्रॉ किया तो ऊपर की साइड पे फ्रेगमेंट्स आए थे, यहाँ पे तो नीचे की साइड में। यू हैव टू फॉलो व्हाट दैट लाइन, कि अगर पोलैरिटी 3' to 5' है, then over here continuous leading strand. If parental strand, template strand polarity is 5' to 3', right? If parental polarity is polarity, that's 5' to 3', then discontinuous strand synthesis, because यहाँ पे फिर 5' आ जाएगा, यहाँ पे 3' तो fragment, right? So check out, देखिए यहाँ पे 5', 3' different है. See, ये 3 यहाँ से 5' to 3' ये direction में है. न्यूली सिंथेसाइज 5' to 3' यहाँ पे होगा. यहाँ पे तो ऑलरेडी हेलिकेज आ गया, तो इतना ही डीएनए रेप्लिकेट हुआ. फिर हेलिकेज और मूव हुआ, तो वन मोर फ्रेगमेंट इज फॉर्म, राइट? आफ्टर दैट दिस आरएनए प्राइमर्स आर देयर, दिस आर रिमूव्ड, एंड दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन विथ ईच अदर, एंड वी कैन गेट 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉपी. यस और नो? बोलिए, ये था पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस. Are you all getting my points? What is this clear to you? कोई भी पॉइंट में डाउट है तो बोलो कि ये नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ रेप्लिकेशन. Okay, next. Okay, now we are going to revise this thing. Okay, चलिए. First, हर्षिल, unmute करो. Yes, ma'am. Start. रेप्लिकेशन प्रोसेस, रेप्लिकेशन एक्सप्लेन करना है आपको. कहाँ से स्टार्ट करोगे? Origin of replication. यस, वेरी गुड. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. चलिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे फर्स्ट क्या फॉर्म होगा? First, वो बबल फॉर्म होगा, रेप्लिकेशन फॉर्म. replication bubble. कैसे Replication. फॉर्म होगा? हाउ विल दिस फॉर्म? What 2-phosphate नहीं group. नहीं 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 नहीं. सी, रेप्लिकेशन जो है फॉर्म कैसे फॉर्म होगा? व्हेन टू स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड, यस और नो? Yes, ma'am. कैसे सेपरेट होंगे, बोलिए. both the chains, how will get separate both the chains? बोलिए. दिया अमीन. Yes, ma'am, by breaking hydrogen bond. With the help of which enzyme? Yes, helicase or unwindness, right? चलिए. Next, वंशिका. वंशिका. Okay. Forum. Yes, ma'am. बोलिए. After that, once the hydrogen bonds get break, text is what? आप लोगों ने लिखा कि नहीं कुछ? जिया श्री बोलिए. SSBP. यस, हेलिकेस के बाद किसका रोल आता है? SSBP. आफ्टर SSBP, Topoisomer. yes, okay. For eukaryote, topoisomerase, prokaryote, kinases. After topoisomerase, Primer. primer name, enzyme name, RNA polymerase.
Okay, RNA polymer. RNA polymerase, or you can say that primase, which form the primer that initiate the replication, right? That nucleotide synthesis. Now, for after the RNA polymerase, which enzyme? Jiyashri? DNA polymer. Yes, DNA polymerase 1. Chaliye, which elongate that chain. After that, boliye. At the end, which one come? At the end, ma'am, I don't know that. Okay, चलिए. एंड में पता है लिगेज एंजाइम दैट जॉइन. लिगेज का मीनिंग जॉइनिंग होता है ना. यस और नो? राइट. सो राइट. सो फर्स्ट एक्चुअली ओके, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 पहले आएगा. ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3. डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? फॉर ओवर हियर इलोंगेट दैट न्यूक्लियोटाइड चेन. नाउ फिर जो आरएनए प्राइमर था फ्रेगमेंट्स में, दैट थिंग इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लिगेज फिर वो फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा. एंड दिस इज द एंटायर सीक्वेंस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. बोलिए, क्लियर है? Right. So now you may leave now. Goodbye.